Hello children, in this video we are going to talk about the 13th chapter of class 7 motion and time. In class 6 you have learned about what is motion and what are the different types of motion. So here we are going to revise that once again, and next is what is time. Of course you know that what is time. हम लोग क्लास 6 में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज मोशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, एंड आप लोगों को ये भी पता है व्हाट इज टाइम. आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं टाइम के बारे में, इजंट इट? सो हम लोग बस अभी ये दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पे बोलने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोशन. तो आप लोगों को पता है वो मोशन मतलब मूवमेंट होता है. अगर मैं इधर खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम गोइंग एंड आई एम चेंजिंग माय प्लेस टू हियर, है ना. मैं यहाँ से मैं यहाँ की तरफ चल के आ गई, तो मेरा प्लेस यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है. सो व्हाट यू हैव सीन दैट, आप लोगों ने क्या देखा, मेरा पोजीशन चेंज हुआ है ना. सो उसका मतलब क्या है, वहां पे आई मेड अ मोशन, आई मेड अ मूवमेंट. दैट सो वी कैन से दैट if an object keeps on changing its place or position with time. So अभी ये देखना है with time मतलब क्या है. आप लोगों को पता है कि समय तो चलते जाता है ना. The time is moving on, you know that we can't hold the time, है ना. आप लोग कोई भी टाइम को होल्ड नहीं कर सकते, टाइम को हम रोक नहीं सकते. तो तभी मैं बात कर रही हूँ तो टाइम तो चलते जा रहा है, isn't it? Seconds are moving on. Yes, you know that. So we can say that if I'm moving from one place to another, not only my position is changing, the time is also changed. Yes. So that's why it is saying here, if an object keeps on changing its place or position with time, then we can say that that object is in motion. So is that clear what is meant by motion? For example, I am going to travel from point A to point B. So what I am going to do? I am going to travel from point A to point B. मतलब मैं point A से point B तक मैं pass कर रही हूँ. So क्या what I will do? Either I am here, so I am definitely move from here to here, isn't it? So this is my distance that I have to move. तो मैंने यहाँ से यहाँ तक move किया, है ना. तो उसका मतलब क्या है, changed my position. Of course, I have changed my position. Suppose यहाँ से यहाँ तक move करना मतलब ये जो distance जो है वो मेरा अगर 1 किलोमीटर है, आप लोग समझ लो. फॉर गैस इफ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 1 किलोमीटर, और मैंने यहाँ से यहाँ तक पास करने के लिए मैंने 50 मिनट्स ले लिया. ओके, आई टुक 50 मिनट्स. सो ऑफकोर्स जब मैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो उसके साथ साथ मिनट्स टाइम भी तो पास हो रहा है, isn't it? So it's, I think now it's more clear for you what is motion and how we can connect the motion with time. That means again, I am going to repeat the definition. If an object keeps on changing its place or position with time, it is said to be in motion. Okay. Now let's see what is rest. So rest is, you know that rest is the opposite of motion. मैं यहीं पे खड़ी हूँ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, I am not changing my position. मैं यहाँ से हिल ही नहीं रही हूँ. Okay. So that means at this I am at rest. मैं तो rest में हूँ. I am not changing, but the time is moving. But घंटों भर मैं इधर ही खड़ी हूँ. Suppose आप लोग सोचो मैं इधर ही खड़ी हूँ. So that means the object is on rest. I am on rest. My position I didn't change my position. Okay. So let's here we can say that if an object does not change its place or position, it is said to be rest. Is that clear for you? What is called motion and what is called rest? Now we are going to learn about what are all the different types of motions. Different types of motions. So first here we are going to explain about the linear motion. So you know that what is meant by linear. Linear means it's a straight line. So motion, what is motion? You know that. So linear motion means some motion is happening on a straight line, है ना. Linear मतलब क्या है? Straight, सीधा, है ना. So linear motion मतलब क्या है? आप लोगों को पता है. एक मोशन तो क्या है आप लोगों को पता है. तो लीनियर मोशन ये होता है जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. सिंपल. So let's see the definition. When the object change their position with time. हमें पता है, हमने ऑलरेडी देखा टाइम से हम कैसे कनेक्ट करके मोशन का बात करते हैं. So when the object
change their position with time along a straight line. This is straight line. Okay, changing their position with time along a straight line, and this type of motion is called a linear motion or straight motion. So let's see the example. You know that the motion of bus on a straight bridge. एक straight bridge से bridge के ऊपर से अगर एक बस पास कर रहा है, so that is a linear motion. And soldiers in a march past, वो भी आप लोगों ने देखा है, जब सोल्जर्स मार्च पास करते हैं तो आप लोगों ने देखा, उन लोग हर वक्त एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, isn't it? एक स्ट्रेट लाइन पे उन लोग मोशन करता है. So that is the linear motion. Now we are going to explain the second type of motion, that is circular motion. So the name itself, it is clear for you what is circular motion. Okay, so let's see what is circular motion. When the object change their position with time in a circular path, that means it is changing its position with time, that you know, that is the motion. सो सर्कुलर मोशन मीन्स अगर वो अपना पाथ एक सर्कुलर मोशन में चेंज हो रहा है, मतलब उसका एक एक मोमेंट एक सर्कुलर मोशन में उसका मोमेंट चेंज हो रहा है, तो हम उस मोमेंट को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड इन अ थ्रेड एंड रेल. मतलब हमने देखा है, हम लोग एक रस्सी में एक स्टोन बांध के हम ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे राउंड राउंड वेरी फास्टली हम लोग घुमाते हैं. Okay, so you have seen that there is a central point is there, and here it is having a circular path. For example, यहाँ पे एक thread बांधा है और यहाँ पे एक stone. Okay, if I am if I am moving, so you can see that a circular motion will be formed, isn't it? एक circular path यहाँ पे form होता है, एक imaginary path में ये stone ऐसे 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 circular motion में यहाँ पे move होता है. So this is the circular motion. नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन. यहाँ पे आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर रोटेटरी मोशन? दैट आई विल टेल यू व्हाट इज मीन बाय रोटेशनल मोशन. What is rotational motion? Motion in which a whole body moves about an axis is called rotational motion. मतलब एक एक्सिस में उसका रोटेशन पूरा हो रहा है, मींस itself it is rotating. Okay, itself it is rotating. For example, motion of a top. आप लोगों ने देखा है टॉप को आप लोग रोटेट करता है, it is moving on its own axis. Rotation of an earth, वो अपने आप घूमता है. Earth is rotating itself, its own axis. So उस type of motion को हम लोग बोलते हैं rotational motion. For example, you know the top. It is having a neighbor here, you know, it is called the top. आप लोग बचपन में बहुत खेलते होंगे, अभी भी खेलने में मजा आता है. सो इट इज द रोटेशनल. अपने ऐसे रस्सी बांध के आप लोग ऐसे फेंकते हैं ना, लट्टू बोलते हैं आप लोग उसको. यस, सो दिस इज अ टॉप, वी विल कॉल इट इज अ टॉप. यू हैव सी दैट लट्टू कैसे घूमते हैं आप लोग, ऐसे आप लोग जमीन पे फेंकते हैं तो वो अपने आप ऐसे रोल रोल घूमते हैं ना. सो दैट इज अ रोटेशनल मोशन. हियर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक सेंट्रल पॉइंट तो होता है और इतना डिस्टेंस में ये अब एक रोटेशन हो रहा है, ये अपने आप ये घूम नहीं रहा है. ये क्या होता है, ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ में इसका मूवमेंट हो रहा है. इट इज मूविंग, द एंटायर ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. उनका पाथ एक सर्कुलर मोशन में होता है और यहाँ पे होता है ये अपने आप पूरा बॉडी एक रोटेट राउंड एंड राउंड होता है. हमें पता है इसका कॉम्बिनेशनल मूवमेंट होता है. द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मोशन हम बोलते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. आप लोगों को पता है ना, अर्थ सन को घूमते हैं. कैसे घूमते हैं आप लोगों को पता है, जैसे कि सन इज द सेंटर, दैट मीन्स द अर्थ अपने आप भी घूमते हैं और सन को भी घूमते हैं, isn't it? So we can say that it is rotating and it is revolving in a circular motion. So that is a combinational example or combinational motion. Example for the combinational motion, isn't it? Clear? So I think now it's clear for you what is the difference between circular motion and rotational motion. I think in this class you have cleared all the doubts and all the confusions about the difference between these two type of motion. The fourth one is periodic motion. So let's see periodic motion. Before starting the periodic motion, I would like to say that in this lesson you are giving more priority to this type of motion, that is periodic motion. So let's start. So periodic motion means motion in which an object repeats its motion after a fixed interval of time. That is very important. It repeats its motion after a fixed interval of time. That means एक fixed interval के बाद, मतलब एक
गैप के बाद वो वही प्रोसेस को रिपीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, आप लोगों को झूला झूलने में बहुत मजा आता है. झूला कैसे झूलते हैं, वो एक जीरो पोजिशन में रहता है ना, वो थोड़ा आगे जाएगा, फिर वो अपना पोजिशन में आके वो पीछे क्या हो जाएगा, फिर वापस अपने आगे का पोजिशन में आता है ना. उसके बाद फिर से वो वही प्रोसेस रिपीट करेंगे ना, वही मोशन वो रिपीट करता है. सो आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल इट इज रिपीटिंग द सेम motion. For example, see here it is telling motion of a swing, that is jhula jhulne mein, and oscillation of a pendulum. Pendulum, what is pendulum, how it's work, that we will look at on the next video. So simply मैं बता रही हूँ, if it is a pendulum means it is having, suppose it is the position, suppose we can say that it is a zero position. अगर हम swing झूले के बारे में भी बात कर लो तो इसका एक मूवमेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक एक मूवमेंट होता है. सपोज इट इज द पोजिशन ए एंड इफ आई एम टेलिंग दिस इज द पोजिशन बी, है ना. झूला कैसे झूलते हैं, यहाँ पे रहेंगे आप लोग, पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, isn't it? This is the motion. It is coming to back towards zero position, then it move its forward position, isn't it? To and fro बोलते हैं इस movement को, that we will learn in detail on the next video. So these are all the 4 types of motions, or we can say that these are the main different types of motions. Let's see some examples of different types of motion. This activity is there in your textbook. This is the first activity of your textbook. So let's see. Example of motion, and here specified that type of motion. You have to specify whether it is a motion along a straight line, or it is a circular motion, or it is a periodic motion. So you are having an example. So let's read one by one. फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोल्जर्स इन अ मार्च पास. तो वो तो हम लोगों ने पहले भी हमने वो एक्सप्लेन किया है. सोल्जर्स इन अ मार्च पास, दे आर ऑलवेज डूइंग मार्च पास्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन. So it is the motion along a straight line. That is very clear for you. And the second one is bullock cart moving on a straight road. You know that the bullock cart is moving, again it is a straight road. So we can say that this is also a motion which is along a straight line. थर्ड वन इज हैंड्स ऑफ एन एथलेट इन अ रेस. यू नो दैट एथलेट कैसे भागते हैं, मतलब रनिंग कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, इजंट इट. सो हियर एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे ये टू एंड फोर्थ मोशन हो रहा है. So we can say that it is a type of periodic motion, isn't it? I think there is no confusion on that. They are talking about the hands of an athletic. Means they are not talking about कि straight मतलब running कर रहा है कि नहीं. They are just specified here the hands. Okay, hands of an athlete in a race. Okay, so it is a periodic motion. And next is the next is pedal of an bicycle in मोशन. मीन्स पेडल ऑफ अ बाइसाइकिल. यू नो बाइसाइकिल का पेडल कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन, इजंट इट? वो फिक्स्ड रहता है और वहां पे हम लोग सर्कुलर मोशन में जब पेडलिंग करते हैं तो बाइसाइकिल आगे की ओर मूव होता है. सो इधर पेडल को स्पेसिफाई किया है. सो इट इज अ सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. वो भी हमने बोला है. मीन्स अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. मीन्स सन के सन को कौन रोटेट करते हैं, हु इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट इज अर्थ. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ स्विंग. दैट इज झूला कैसे झूलते हैं, हमने बोला था. इट इज ऑल्सो गोइंग टू फ्रंट साइड एंड बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, देन इट गो बैक again and then come again to its normal position. So again it is a periodic motion. And next is, and the last one is motion of a pendulum. That also I said it is also and again a periodic type of motion. So hope this is clear for you. And these are the different types of motions, and you have seen the various examples on that. Thank you.